all of you. I'm just going to do it or perform it on a very preliminary or trial basis. So today I'm going to teach you the periodic classification of element. Okay, so main points in this chapter is elements and their classification. तो क्लासिफिकेशन की आइडिया पहले प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था, उसमें फर्दर इन्वेंशन कैसे होते जाए, फर्दर मॉडिफिकेशन कैसे हो जाते. तो पहले तो फर्स्ट वेरी प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन वाज डन बाय डोबर्नियर in the form of Dauvergne triads. Then the scientist Newland's law of octave, and then Mendeleev's periodic table with its merits and demerits, and then the modern periodic law, which is very important. Modern periodic law is the very important session in our chapter. So first we will study the very primitive type of classification of elements performed by Dauvergne. So in 1817, the German scientist Dauvergne first suggested that the properties of elements are related to their atomic masses. Now he considered the atomic mass as the fundamental property of the elements for the classification. और उसने क्या किया कि he made the group of 3 elements having similar chemical property. जैसे तीन एलिमेंट्स का उसने ग्रुप बनाया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, एंड he called them as a triads. Okay, then he arranged the 3 elements in a triad in an increasing order of their atomic masses. Means क्या है कि जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है उस ट्रायड में से, जो सबसे हल्का, उस एलिमेंट को पहले नंबर पे रखा, और जो हेवीएस्ट है उस एलिमेंट को लास्ट में रखा, और मिडल में जो मिडल एलिमेंट है, मिडल हेवीएस्ट. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज very crucial. He then, the atomic mass of the middle elements in a triad was approximate. This is a very important word, approximately, not exactly equal to the mean of atomic masses of other 2 elements. माना अगर हमने फर्स्ट और लास्ट, ये जो ट्रायड्स में जो 3 एलिमेंट्स है उसमें से फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज निकाला, तो वो एवरेज जो है वो मिडल एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास है उसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाता है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, माना उसके इर्द गिर्द, उसके आजू बाजू कहीं पे वो आ जाता है. अब डीमेरिट्स क्या है? अभी उस वक्त तो लगभग 30 एलिमेंट्स इन्वेंट हुए थे, लेकिन वो 30 एलिमेंट्स भी उसमें क्लासिफाइड नहीं हो पाए. तो उस ऑल द इन्वेंटेड एलिमेंट्स को भी ये क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो लागू नहीं हो पाए. सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस. नाउ यू कैन स्टडी इन योर बुक दैट दिस इज द फर्स्ट ट्रायड, लिथियम, सोडियम एंड potassium. Now you know that lithium, sodium and potassium, even in modern periodic table, you will study in the further part of the chapter, that these 3 elements are following the law of triads. Means the atomic mass of sodium is 6.9. Now the atomic mass of sodium is 23 and potassium is 39.1. So according to Daubern's triads law, the mean of first and last element, my atomic mass of first and last element is 6.9 plus 30.9, 39.1 divided by 2, so that is 23. Now, and coincidentally, the atomic mass of the middle element, that is sodium, in this triad
is exactly equal to 23. That is not approximately, but it is exactly. Now about calcium, cerium and beryllium, the same law is applicable, but that is approximately equal. But for all the invented elements, this law does not prove as a applicable.